Planetary Woes. Muna Khan. Published November 21, 2022. Dawn Editorial. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. The world's population hit 8 billion on November 15, which the United Nations declared as the Day of 8 billion. 12 years ago, the population figure passed 7 billion. One report in Scientific American noted how it took all of time for the global population to reach 1.6 billion, and then it shot to 6.1 billion in about 100 years. There's been a lot of work by demographers to track population growth. The International Institute for Applied Systems Analysis in Vienna in 2018, for example, forecast that the global population would be about 9.5 billion in 2100. It is now revising that estimate to between 10 billion and 10.1 billion. That revision is due to higher observed and expected survival rates among children in lower-income countries. Another factor is higher estimates of fertility rates in some large countries, including Pakistan, it says. Popular theory has long been that population growth contributes to global warming, as more people use fossil fuels to power their lives. More people means more demand for gas, coal, oil, and other mined fuels, and therefore more climate change. During the less than a century it took for the population to grow to 6.1 billion, emissions of carbon dioxide grew 12-fold according to the aforementioned Scientific American report. Pakistan can't pretend it doesn't have a population problem. While it makes sense to link overpopulation to climate change, too many people consuming energy, is it fair? And does it absolve developing countries from addressing the very real issue of overpopulation in their countries? Thomas R. Malthus is often credited for sounding an alarm bell in 1798, when he wrote in an essay about how the Earth would not be able to sustain the dizzying speed of a growing population, and it could result in war and famine. The book The Population Bomb in 1968 by Paul and Ilrich painted a grim picture of environmental destruction if there was no halt to population growth. Many critics believe such thinking led to the creation of flawed, racist birth control policies in the global south. Today, more and more scientists are saying that it's not a matter of overpopulation but overconsumption. It isn't the number of people as much as how a small number of those people are causing considerably more than their share of carbon pollution. The average Canadian, Saudi and Australian put out more than 10 times the carbon dioxide into the air through their daily living than the average Pakistani, according to a report by the Associated Press. Qatar's per capita emissions are 20 times Pakistan's, according to the World Bank. The question is not about population, but rather about consumption patterns, climate scientist Bill Hare told the Canadian Broadcasting Corporation. That's why climate scientists want people to see who is consuming the most and who pays the price for that consumption. It is no wonder that climate activists call for rich nations to make reparations to countries like Pakistan, which have suffered. Minister for Climate Change Sherry Raymond is right to raise Pakistan's case on world forums and remind leaders that the country contributes less than 1% to greenhouse gas emissions. Countries and companies responsible for greater emissions should be making greater efforts to fix the problem. And it shouldn't be misdirected as an overpopulation issue in Africa and South Asia. Brown and black people shouldn't be sterilized so that people in the global north can continue their reckless consumerism without a care for their fellow humans. The Berlin Institute for Population and Development says global population growth is showing signs of slowing but carbon emissions are growing faster. Plenty of evidence shows overpopulation is not having the most impact on climate change. Activists are correct to call for a redistribution of resources and push towards use of renewable sources of energy. But as I said earlier, there is a link. While Pakistan is correct to call for climate justice, it would be unfair and foolish for it to pretend it does not have a population problem.
It needs to revisit its family planning programs and create stronger messaging on the benefits of spacing children, for example. It would do well to study how well Iran and Bangladesh tackled their population growth using birth control programs that were created bearing religious sensibilities in mind. The UNFPA says half of all global pregnancies are unplanned, and nearly a quarter of all women do not have enough agency to refuse intercourse. More funding is needed to educate women on a whole, but especially in birth control, safe pregnancies, and safe terminations. Women should not have to die because they could not get access to healthcare for themselves or their unborn babies. The writer is researching newsroom culture in Pakistan. Published in Dawn, November 21, 2022. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. दुनिया की आबादी 15 नवंबर को 8 अरब तक पहुंच गई थी, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने 8 अरब का दिन करार दिया था। 12 साल कबल आबादी का आदाद-ओ-शुमार 7 अरब से तजावुज़ कर गया था। साइंटिफिक अमेरिकन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह आलमी आबादी को 1.6 अरब तक पहुंचने में तमाम वक्त लगा, और फिर ये तकरीबन 100 सालों में 6.1 बिलियन तक पहुंच गया। आबादी में इजाफे को ट्रैक करने के लिए डेमोग्राफरों के जरिए बहुत सारे काम किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 2018 में वियना में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस ने पेशगोई की थी कि 2100 में आलमी आबादी तकरीबन 9.5 अरब हो जाएगी। अब यह तखमीना 10 अरब से 10.1 अरब के दरमियान नज़रसानी कर रहा है। ये नज़रसानी कम आमदनी वाले ममालिक में बच्चों के दरमियान आला मुशाहिदा और मुतवक्किर बका की शराइ की वजह से है। एक और उनसर पाकिस्तान समेत कुछ बड़े ममालिक में ज़रख़ेज़ी की शरह का ज़्यादा तखमीना है। मकबूल नज़रिया तवील अरसे से ये रहा है कि आबादी में इजाफा ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा लेता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगियों को ताकत देने के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतलब गैस, कोयला, तेल और दीगर खानकनी के ईंधन के लिए ज़्यादा मुतालबा है, और इस वजह से ज़्यादा आब-ओ-हवा की तब्दीली। एक सदी से भी कम अरसे के दौरान आबादी को 6.1 बिलियन तक बढ़ने में वक्त लगा। मज़कूरा साइंसी अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में 12 गुना इजाफा हुआ। पाकिस्तान ये दिखावा नहीं कर सकता कि उसे आबादी का कोई मसला नहीं है। अगरचे ज़्यादा आबादी को आब-ओ-हवा की तब्दीली से जोड़ना समझ में आता है, बहुत सारे लोग तवानाई इस्तेमाल करते हैं। क्या ये मुनसिफाना है? और क्या ये तरक्की पजीर ममालिक को उनके ममालिक में ज़्यादा आबादी के हकीकी मसले को हल करने से बुरी अज़िम्मा करार देता है? थॉमस आर माल्थस को अक्सर 1798 में खतरे की घंटी बजाने का सेहरा दिया जाता है, जब उन्होंने एक मजमून में लिखा था कि किस तरह ज़मीन बढ़ती हुई आबादी की चकरा देने वाली रफ्तार को बरकरार रखने के काबिल नहीं होगी, और उसके नतीजे में जंग और कहत पड़ सकता है। 1968 में पाल और एनएल रीच की किताब दी पॉपुलेशन बम ने माहौलियाती तबाही की एक संगीन तस्वीर पेश की अगर आबादी में इजाफे को कोई रोक नहीं था। बहुत से नाक़दीन का ख्याल है कि इस तरह की सोच ग्लोबल साउथ में नाकिस नस्ल प्रस्ताना बर्थ कंट्रोल पॉलिसियों की तश्कील का बाइस बनी। आज ज़्यादा से ज़्यादा साइंसदान कह रहे हैं कि ये ज़्यादा आबादी का मामला नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खपत का मामला है। ये लोगों की तादाद इतनी नहीं है जितनी उन लोगों की एक छोटी सी तादाद कार्बन आलूदगी के अपने हिस्से से कहीं ज़्यादा पैदा कर रही है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया की औसत आबादी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में 10 गुना ज़्यादा खारिज करती है, हालांकि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी औसत पाकिस्तानी के मुकाबले में ज़्यादा है। आलमी बैंक के मुताबिक कुतुल का फीकस इखराज पाकिस्तान के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा है। आब-ओ-हवा के साइंसदान बिल हेयर ने कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को बताया, सवाल आबादी के बारे में नहीं है, बल्कि खपत के नमूनों के बारे में। यही वजह है कि आब-ओ-हवा के साइंसदान चाहते हैं कि लोग देखें कि कौन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और कौन इस खपत की कीमत अदा करता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आब-ओ-हवा के कारकुन अमीर ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक को मुआवजा दें जिन्होंने नुकसान उठाया है।
वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मुकदमा उठाने और रहनुमाओं को याद दिलाने में हक बजानिब हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। ज्यादा से ज्यादा अखराज के जिम्मेदार ममालिक और कंपनियों को इस मसले को हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करनी चाहिए और उसे अफ्रीका और जनूबी एशिया में ज्यादा आबादी के मसले के तौर पर गलत समत में नहीं जाना चाहिए। ब्राउन और सियाफाम लोगों को जरासीम से पाक नहीं किया जाना चाहिए ताकि ग्लोबल नॉर्थ में लोग अपने साथी इंसानों की परवाह किए बगैर अपनी लापरवाह सारिफियत को जारी रख सकें। बर्लिन इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट का कहना है कि आलमी आबादी में इजाफे में कमी के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्बन के अखराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। बहुत सारे शवाहिद से पता चलता है कि ज्यादा आबादी आबोहवा की तब्दीली पर सबसे ज्यादा असरअंदाज नहीं हो रही है। सरगर्म कारकुन वसाइल की दोबारा तकसीम का मुतालबा करने और तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए के इस्तेमाल की तरफ जोर देने के लिए दुरुस्त हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, एक लिंक है। अगरचे पाकिस्तान का आबोहुआ के इंसाफ का मुतालबा करना दुरुस्त है, लेकिन यह गैर मुनसिफाना और अहमकाना होगा कि इसका यह दिखावा करना कि इसमें आबादी का कोई मसला नहीं। इससे अपने खानदानी मंसूबा बंदी के प्रोग्रामों पर नज़रसानी करने और मिसाल के तौर पर बच्चों को वक्फा देने के फ़वाइद के बारे में मजबूत पैगाम रसानी पैदा करने की ज़रूरत है। इस बात का मुताला करना बेहतर होगा कि ईरान और बांग्लादेश ने अपनी आबादी में इजाफे से किस तरह निमटने के लिए बर्थ कंट्रोल प्रोग्रामों का इस्तेमाल किया जो मजहबी हसासियत को जहन में रखते हुए बनाए गए थे। UNFPA का कहना है कि तमाम आलमी हमले में से निस्फ गैर मंसूबा बंद हैं और तकरीबन 1/4 ख्वातीन के पास जिनसी ताल्लुकात से इनकार करने के लिए काफ़ी एजेंसी नहीं है। मजमूई तौर पर ख्वातीन को तालीम देने के लिए मजीद फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन ख़ास तौर पर पैदाइश के कंट्रोल, महफूज हमल और महफूज खात्मे में। ख्वातीन को मरना नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने आप ने नौज़ायदा बच्चों के लिए सेहत की देखभाल तक रसाई हासिल नहीं कर सकती है। मज़मून निगार पाकिस्तान में न्यूज़ रूम कल्चर पर तहक़ीक़ कर रहे हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 21 नवंबर 2022। Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share.